Hello and welcome to Strive Dialogues. Today, as you all are aware, based on the flyer which we have issued, that we are going to discuss about Silkiara tunnel rescue operations, which have been successfully completed yesterday. And for that, we must thank ONGC, SGVNL, RVNL, NHIDCL, TSDCL, and BRO. And we must not forget the rat miners of Madhya Pradesh who were flown in the end to ensure that the final rescue which had got struck because मशीन खराब हो गई थी, अगर मशीन जो आई थी बाहर से आई थी वो खराब हो गई थी, कुछ मलबा उसके ऊपर गिर गया था, कुछ स्टील रॉड्स गिर गए थे, जिसकी वजह से आगे जाना मुश्किल हो रहा था। तो पहले उस मशीन को काट के बाहर निकाला गया, फिर उसके बाद जो लास्ट 9 मीटर्स का जो स्ट्रेच था वो रैट पाइनर्स ने निकाला। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे अपने जो आज के एक्सपर्ट हैं, हमारे सब्जेक्ट के, जो हमारे स्ट्राइब के ही वाइस वाइस चेयरमैन हैं, मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, जैसा कि हमने थोड़ा ब्रीफ सा ही इंट्रोडक्शन दिया है, सबसे पहले हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, और जितने भी रेस्क्यू पर्सनल थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन सभी को हमें आई थिंक थैंक्स बोलना चाहिए। और आखिरी में मुझे एक बढ़िया सी चीज़ इसमें नज़र आई इस पूरे ऑपरेशन में, वो ये थी कि आदमी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अल्टीमेटली वो जो रैट माइनर से जो पाइप के अंदर घुस करके और धीरे-धीरे उन्होंने जो लास्ट का जो 8 मीटर्स था उसको खोद के बाहर निकाला, और फिर फाइनली वो कॉन्टैक्ट में आए अपने 41 जो जो हमारे वर्कर्स थे जो वहाँ पे ट्रैप हो गए थे। तो कहीं न कहीं आई थिंक ह्यूमन माइंड जो है वो अभी भी सुप्रीम है, मशीन्स असाइड। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मशीन्स का वो काम कम है, लेकिन ह्यूमन माइंड तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि सर, क्या-क्या एफर्ट गया और कैसे इसको प्लान किया गया था शुरू में, और बाद में इसमें क्या-क्या अड़चनें आई, तो कैसे प्लान्स मॉडिफाई हुए? थोड़ा ब्रीफ में ना रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में ज़रा बताएँ, सो दैट हमारी ऑडियंस को समझ में आए। टीवी पे तो वो चलता रहता है, बट हम चाहते हैं कि अपना एक्सपर्ट करेक्ट तरीके से बताएँ कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था। ओवर टू यू सर। नो साउंड सर। ओवर टू यू सर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है? ओके, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं जनरल चतुर्वेदी के वॉइस में, इसलिए वो अपने इस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। दोबारा लिंक करेंगे वो, और जब वो लिंक करेंगे तब हम बताएंगे। इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन शुरू में जब किया गया, तो शुरू में तो काफ़ी लोग इसमें वो हुए, इस तरह से हम इसको आगे बढ़ें इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। बाद में I'm here. या सर, सो मैं मेरा जो सवाल था वो ये था कि हमारे जो ऑडियंस हैं उनको जरा बताइए कि ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे इनिशियली प्लान किया गया, और बाद में कितनी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी उस इलाके की जो चैलेंजेस हैं उसकी वजह से। और बार-बार हमको आखिरी में भी, लास्ट में जब लोग बोल रहे थे कि बस 2 घंटे में हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमको 5-6 दिन लगे रैट माइनर्स को बुला करके उनको लास्ट स्ट्रेच में लास्ट स्ट्रेच जो है इसको क्लियर करने के लिए। ओवर टू यू सर। Uh, Dushyant, thank you. First, let me just recapitulate slightly what happened, and then we'll go into the rescue work. Yeah, sure. As we had discussed last time, it is about say 4,531 meters long tunnel which was being planned on NH 134 connecting Barhat to Yamnotri. This tunnel, when completed, will reduce distance by 26 kilometers and 45 minutes. The diameter of this is about say 15 meters. On 12th morning, what had happened was that at CNH 203 meters from Silkiara side, correct, there's a collapse which was up to 260, say about say 57 meters of rubble had collapsed.
Now, Okay. in this case, a very important aspect was the tunnel had been completed for 2,500 meters. So, Absolutely. therefore, this 41 workers were beyond that 260 meters. Okay. That is the point which needs to be taken into account. और Second thing is, और दूसरी तरफ बंद था, 2.5 किलोमीटर के हाँ बाद दूसरी बंद। तरफ बंद था, दूसरी तरफ बिल्कुल। बंद था. But then they had about say 2.2 kilometers of distance to themselves, these हम्म। 41 workers. Now, ओके। second thing in this case is, which is important to note, is that there is a pipe for the compressed oxygen to go in. So there करेक्ट। was one kind of a communication kind of a thing was available to them. जो कि एक Third thing स्टैंडर्ड is, प्रोसीजर है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जब भी हम this टनल this is a लगाते हैं standard procedure. तो That's a ऑक्सीजन standard लेवल के। procedure. But there is हाँ। one more standard procedure which you will talk subsequently, that हम्म। which was violated. So this ओके। happened at 5:30 in the morning. Please note down the timing. हम्म। So 5:30 in the morning. Third करेक्ट। thing in this case, which is important to note, is another aspect is that these uh, um, rock of this area is हम्म। fallatis or meta siltstone, which is kind of a clay in nature. And in case of water ingress takes place, it becomes very unstable. And that is exactly what happened. ओके। Now, the second thing is the total time taken for this rescue was about say 422 hours over 17 days. And करेक्ट। second thing is about 1,000 workers overall were involved, out of which about 600 were government of agencies. Balance were say rat miners, NHIDCL, then Navug Engineering, and करेक्ट। those and the many other agencies. Now, what was the approach which was taken for this? And the approach taken was whole of nations approach. Right from beginning, it was thought initially, and in this case, the second thing, which is the first 2 days, it didn't occur to them that it is very important. So DM and SSP and all those fellows were doing, but then they realized it is going beyond that. Then PMO directly started monitoring this progress of this work. That is a करेक्ट। very important aspect to note, that in सर, such a thing, highest मिस्टर level they were being monitored. Mr. Now, Biplab had been sent immediately from the PMO. yes, yes, that is he was there, and there are PK Mishra daily taking briefing, Prime Minister talking directly to Chief Minister, and there are a whole lot of things. Kulbe was there on the site itself for a long time. Correct. Now, MORTH and civil as aviation. Now, what was the tasking? The agencies, the about 18 agencies were involved in this kind of a work. So, Okay. MORTH, that is Ministry of Road, Highways, and Road Transport and Highways, this Mhm. they were, and civil aviation, they were coordinating with other organs of government and external agencies. That's the Government of India, two agencies. And that's why Mhm. Minister General VK Singh, for a long time, he was as a representative of Prime Minister, he was sitting at the site. Now, Correct. as far as state government was concerned, the first and foremost thing they had the responsibility was medical facilities. So Correct. they, in this 200 meters, which was already completed towards the Silkyara side, they had created a six-bedded hospital, and 41-bedded hospital they had created in Chingali Sort. So, which was just about say 45 minutes from there. So that's another thing which is important. Hospital, then medicines they have started providing right from beginning, and also telemedicine based advice. So that is Correct. something. They also provided logistic support, traffic control, safety and security. Now, as far as NDMA is concerned, that is headquarter. If you notice, General Hasnan was very much visible, and that was as a that to interact with media, because speculation leads to some kind of a rumor mongering. To avoid that, General Hasnan did a fantastic job that he kept media under check. Now, as for NDRF and SDRF, their task was rescue and relief. Now, initially they had no role, but they were practicing and they were trying to see that how best once this tunnel is through, then how they can do the rescue and relief work, and they were all prepared for that. Now, one agency which goes totally unnoticed in this case of thing is BRO. Now, as far as BRO is concerned, they have actually, BRO is an agency which has been doing this kind of a work for a long time. They are making about say, 10 tunnels. Some of those tunnels are already Atal Tunnel,
Sela, they are already without any kind of any hiccups. So they are well versed with this kind of a thing. That Project Shivalik, chief engineer, Plonged himself. He was he provided machinery for vertical drilling, but in the sense that track for machinery, about say 1100 meters track he provided when SJVNL drill has to be taken to top for the vertical drilling. They also helped ONGC. It's about 4.5-kilometer track they made for ONGC to come from behind and do the demolition and the work. They also were coordinating the transportation of equipment with Air Force. Now, in this case, the most important thing was that initially that American earth auger from Delhi to Dehradun and Dehradun to Silkyara. Now, later, once that thing got damaged, the plasma cutters also they managed to bring. Now, they also provided one ROV, that is remotely operated vehicle for, I mean, say you can say robotic vehicle or something, trench boring equipment, and 72 meters of 800 to 700 millimeter CI, that iron pipe, MS pipes they had provided. They also provided about say 50 Hume pipes and 50 box type culverts in case if they are for providing the easy access to the area to the state government. Now, as far as army engineers were concerned, they were standby for a one task which we will talk a little later, that is drift tunnels on the sites to be made. And they were also doing innovation when these boys rat miners were employed. They were also providing the you can say welding support, cutting support, and all those things. Now, as far as the Air Force is concerned, they provided Chinook at Chingali Sort for evacuation of casualties, and also transportation of equipment ex Indore, Hyderabad, wherever it was to come from to Delhi and all those things. Now, SJVNL, that is Satluj Jal Nigam, they were tasked for vertical drilling of 1200 millimeter in case if this option of going straight into this fails. Now, RVNL, that is Railway Tunnel Party, Railway, they were railway, given a smaller hole, again vertical, so 6 inches, to provide some kind of a support and communication. yeah, ONGC, they provided drilling uh, from Barcode side, and that yeah, is then THDC was also tasked, but they were not utilized. As far as Navyuk engineering is concerned, all operations of drilling actually were being done under the aegis of Navyuk correct, Engineering, who are the EPC contractor for NHIDCL. correct, Trenchless Service and Rockwell, these are the two organizations, and Trenchless Service actually is Delhi based. So most of these rat miners are either from Bulandshahr or Delhi, Kajuri Khas in Delhi. And Rockwell also is there, and they provided rat miners, two teams, and they drilled hole of 12 meters, last 12 meters. And with the support of 2001 Engineer Regiment, which pushed the pipe of 800 millimeters. correct. NHI DCL was providing project management. There was certain international experts. One was who was on the site itself, Mr. Andrew Dix. He was there, Arnold Dix from Austria, and others from Norway and Thailand were also there. They came and they provided the necessary help and they moved away. Former TGBR Sir General Harpal Singh was there. Chief Engineer Central Command was co-located there. Officials of MORTH, state government, PMO remained in uh, on the site and in the constant touch. Now let's go over the timeline so that the second part of your question, that what how it progressed and what happened. And what all happened and why so many changes were made? Yes. So 12th November, tunnel collapses at 5:30 in the morning. That is at 203 meters to 260 meters, 57 meters, and 200 meters. By the way, 200 meters they had already done the lining of the tunnel, so it couldn't have collapsed. Beyond that, it collapsed. Now, 13th November, they tried to do clearance on their own and simultaneously concreting what they were trying to do. They were using that kind of a under pressure, throwing the
concrete up, but it didn't work. Mm-hmm. Next day, that is 14th November, smaller drill was used and earth Mm-hmm. moving equipment was used to clear the debris. Not much of success. In fact, work had to be stopped as some sounds were heard of stone crackling on top. Okay. And if you recall, that is where again they got that panicky that it may again collapse. Mm-hmm. Now, this is the time they took a call on the entire thing, and now they decided that American auger needs to be brought in. Yeah. So American auger was immediately post haste requisitioned and brought to the site. 16th November, they started pushing the pipe, that is 800 millimeter pipe, followed by Yeah. 700. By 700, because what in this, what is done, one pipe is pushed first, the auger cuts the debris, this is pushed, and it is welded from inside and outside with the next pipe. Okay. So, so certain pipes were added. 17th up to 17th November, a good progress was made. 24 meters was already cleared. Yeah. Now, 17th, when it happened, in this case, 16th, if you recall, there was a minor earthquake in that area. Yes. So, so again, there was a problem. It was thought. So, 18th November, they said, "Ki, acha, theek hai, we must work out all options in case if this auger thing fails, because fails, because they had started, say, encountering certain problem areas." Mm-hmm. So, five direction they thought. One was vertical drilling, that we will put a kind of a trolley and we'll bring out people from inside. And that was a task which was given to SJVNL. Yeah. Horizontal drift tunneling. This is where 201 Engineer Regiment was called. And drift tunneling means minor tunnels you make on the side, that is Mm-hmm. one 200 meters, 170 meters, and some point of them they are joined, and then it is goes main tunnel goes inside. So the Okay. workload is, the lot of chota chota tunnel are made and leading to one tunnel and then going into it. But Sir, it was just a added minor, on. sir, just a minor, sorry to interrupt you. As per the PIB briefing, press information briefing, it says that the horizontal drilling from Barcode side was done by THDC. There is Tehri Hydro Electric Development Corporation. Uh, so what they did was, they did this work. So I think it must have been a joint effort of the engineers and the THDC, I suppose. No, no, the from Barcode side engineers never went. Okay. BRO only made the track of 4.5 kilometers. That's it. For Okay. Okay. THDC and ONGC to go there. So what Mm. they did, they tried to use a technique, and this was used. So Mm-hmm. they wanted to make a 343 meters tunnel, and for Mm-hmm. which they used demolition. So about 12 meters they did dig, and after that they stopped because it was not making much of good progress. And they said Okay. that vibration may lead to major collapse into that Of, other portion. So that's of why the they stopped. okay. 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 So now, from Barco's So, side, this was done. 19th November, drilling from top also commenced, because this yeah. was planned 18th November and 19th is start. So 6-inch pipe was on 20th November was inserted from Mm-hmm. Silkyara side, and it Okay. was provided to the hot meals. And Mm. hot meals, 21st November, they provided a camera also, like Okay. something like that medical camera which goes inside, and so that people could see. And that's why that famous photograph of one worker being seen from there started coming up. Yeah. Yeah. Now, That photograph. We used it in yeah, our last program, sir. yes. Now 22nd November, only 6 meter of drilling could be done because it was encountering steel girders, wire mesh, stones. So it was not working out much. So there was a whole lot of problems which were there. 13th November, auger hit a iron girder and got entangled. So that is where, after a lot of what they did, from 800 meters, 800 millimeter, they cut it to 700 meters. Some fins they cut off the auger, but it didn't work. About 1.8 meters progress could be. So 24th November was almost a dark day. We had reached a 48 meters, and now we were thinking, what next? Okay. So blades of auger were badly stuck. Machine Mm-hmm. had to be removed. Now it took Yeah. almost 2 days to remove that. I believe it was cut, sir.
it had to be cut, and it is gone forever, because you can just imagine that it is inside that tunnel, in the debris, is stuck and not coming out. So that Correct. is where all these engineer regiment and all fellows went inside. They did the cutting, removed the blade. Then they went back, and part by part the machine was cut. So navic engineering, and these fellows do, and all the debris was cleared by certain personnel from Jal Board, and they came from Gorakhpur. So those are the Oh, fellows who did. Now 26 November. Now it was a desperate move. So they 26 November they said कि अच्छा अभी तो कुछ नहीं हो रहा, तो अभी चलो मरता क्या ना करना वाली situation हो गई. They called these rat hole miners. Now rat hole miners, if you know that it is rat hole mining is banned since 2014 by NGT, under the Act NGT 2014. It is banned, but right. then it is being done. So they called, these fellows are very confident that within we will do it within 24 hours. Although Correct. the estimate was that it will take about 100 hours, because 0.69 meters were only granted to them कि कर पाएंगे वो एक घंटे में, but Yeah. they did in actually 12 meters. Now what happened when it was reaching, if you recall, yesterday what started happening, that suddenly from midday they said अभी तो पहुंच गए. सो पहुंच तो गए थे भाई साहब आप, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वहां फिर से डेबरी गिरने लगी थी. So that Hmm. is where red miners of six, they work in a team of six. One Yeah. chap does the digging. The second chap shovels it into the trolley. Three, four Hmm. take it out, and balance two, they throw it out and send the trolley back into it. So that Exactly. is where they worked. And within actual work load was only 14 hours, and they worked round the clock. Hmm. Now, so this is what it kept on changing, and they have ordered an inquiry to pinpoint the responsibility by Uttarakhand government. Hmm. MORTH has ordered a safety audit, all the tunnels ordered by which are under construction. Okay. Now, some of the issues which you may be wanting to say, Yeah. some Yeah. one thing was, yeah, Basically, sir, basically what now, I mean, the second one, this is that rescue has finally been done, and we had to do mid-course corrections, etc. But the problem now is for the future, right, sir? yeah. So there is a need for a critical analysis of what went wrong in this entire project, and how it can now be rectified for the future, so that we do not have recurrence. We can't be fully sure of not having such a event recurring again, but at least the chances are minimized. No, we have to be 200% sure on such things. I'm Yes, totally with you on this. sure. But before, let us analyze the issues with this tunnel itself. Now, Hmm. one of the things which doctors are suggesting, that it could be that all these fellows, those 41 who were stuck for about say 17 days, they may be Hmm. having probability of having post-traumatic stress disorder. PTSD, sir. But the good part is that all that effort of NDRF to bring them on stretcher and medical and all those things, they came hale and hearty, and they came crawling themselves, And I and and their I think vitals were all and I think they and sent yeah, they sent mobiles and camera for some entertainment. Some music was also yes, beamed through that. So overall, I music was, think while talking to Prime Minister, the foreman said beautiful thing. yes, He sir. said first thing is that the day the communication started with us, for first 2 days we were problematic, but then since light was already there inside the tunnel, so that phobia of darkness was not there. Second thing is, once the food started coming, so after say 21st, in any case it became after 9 days, when hot meals started coming, then it became good. So they followed a routine. He said Hmm. what I suggested to them, that they should do yoga. They Hmm. should, all of them should do go walk, for walking. What? After all, 2 kilometers They is were, a lot. provided cards, and they were playing cards, Correct. and so some kind of a entertainment and everything was there. So they kept. Now in this case, Dushan, one more which is very important thing is, Yes, sir.
आप भी यू आर कनेक्टेड टू विलेजेस. एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, कहावत है गांव में, Hmm. जिंदा हाथी लाख का, मरा सवा लाख का. Hmm. Now, what is the correlation with this? All these fellows are from a very, very humble background. So there Absolutely. they have to go for work. Correct. So they feel that in case अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया तो हमको इतना compensation मिलेगा कि हम आराम से जी सकेंगे. Hmm. So therefore they are not, and then joint family system of the villages Hmm. makes them little more hardy. They are Correct. not as nervy as someone say single child. So stresses are not, उनकी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं. किसी का Hmm. घर में प्रॉब्लम है, किसी की दोस्तों से प्रॉब्लम है, so दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है, पैसे की प्रॉब्लम है. So Correct. they are hardy people. So that is one thing which does not work. Now in Correct. this case, one of the major issue was multiplicity of control. Now every agency is working except that PMO is monitoring. Hmm. Rest all, everyone is working on their own. Now that Correct. is what is dangerous. I think in the standard operating procedure, which And you needs do. to be very implemented very strongly, and that is that any such thing should be straight away be a control center established, and a single agency deals with the people, and rest all law. In this case, if you see that Mahmood Ahmad sometimes briefing, sometimes Mr. Khulbe briefing, sometimes that secretary, special secretary of Uttarakhand government briefing, sometimes VK Singh is coming, sometimes chief minister is coming. All things should be avoided. It should be behind the scene. Now Correct. as far as role of BRO is concerned, BRO is building 10 tunnels, and some of them are ready also, and they Hmm. never had any problem. Correct. Whereas NHDICL is still a fledgling organization. This is Hmm. probably is their third tunnel Hmm. to Jozila tunnel, that is Z mode and Jozila, and second is this tunnel. So now their systems and procedure, they still need to be kind of improved, and there the problem is of short tenure. Hmm. बिकॉज कोई आया 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, सो उनके जो वर्क्स मैनेजर वगैरह भी होते हैं, दे आर नॉट एज एक्सपीरियंस्ड एज बॉर्डर रूट्स. So therefore, Okay. I think there should be a very cross pollination of fertilization of knowledge between the two organizations, because NHIDCL is the best idea. There is no doubt in my mind that Hmm. NHIDCL border roads cannot take on this kind of a task unless you make it a bigger behemoth or something, which is not the right thing. NHIDCL in the hinterland should continue working. In any So case, sir, that the is role of BRO is totally different border areas, border in support of the armed defense force, forces. and also the border areas close to the borders. Now, I'm coming now touching some very, very serious issues. Yeah. This DPR was made. Somebody should go into it, that how this DPR could be made, which is alignment itself, that how it is so close to MCT. That is, last time we discussed that main central thrust, which is just about few kilometers from there. So how can you have so close to a tunnel? That is something which needs to be taken. Then construction methodology. When I said, if you recall, I said that 200 meters only concreting had been done, whereas tunnel had been constructed for 2.5 kilometers. Why didn't they Absolutely. simultaneously did the concreting or lining? They should have done Cementing. simultaneously concreting and lining, and that would have helped them substantially, avoidance of all this kind of a thing. Correct. So they need to go over it, whether any shortcuts were taken. Now survey. Now what they had DPR they have made, but they did the simultaneously ground survey thereafter. But ground survey is essential. Then that MCT and other issues would have been highlighted. Hmm. Now environment impact assessment in this case was not done, because what they did, the moment it becomes less than 100 kilometers, it is not necessary. So 899 kilometers were divided into 33 parts. So it became less than 100 kilometers. So they just avoided, which they should have done, and remedial measures, mitigation techniques should have been applied. Now, Correct. for every tunnel which is 1.5 kilometers, a escape tunnel has to be made. In this Correct. case, tunnel has not been made. Why? Correct. Somebody should raise the question that it should be made. It should have been made. Why it was not made?
Now, rights of workers. Now, as far as border roads is concerned, I saw their mandate. It is linked to the pay and allowances are linked to altitude on which they work. In this case, I'm not very sure that what is the contractual agreement between them but it is circle rate. Border roads nowadays is paying almost double of the circle rate, whereas in this case, at best they must be getting the circle rates which DM specifies. Uh, for this kind of a say, task which entails in danger, I think they should be given little more money for this. Insurance, I'm sure everything has been done because it is medical insurance. All these things are part of that labor laws. This Minimum Wages Act 1948, Employees in State Insurance Act of 1948, Mines Act 52, Employees Provident Act of 52, all are valid, applicable to them. And it needs to be noted that it should be not only done, it should be applied in letter and spirit both. My own experience is many a times it does not happen. Now is that uh, one thing which is limitation of foreign equipment has come. Himalayas is an experience which only India has. No other country, even China, does not have this kind of experience and exposure which India, because as we discussed last time, that is, Tibet is a well stabilized mountain, Yeah, whereas correct, Himalayas are not. correct, So limitation of that, like American auger which came, which was with much tom that it will be able to do it, it could not do it. So correct, we will have to develop our indigenous industrial capability and also capacity to handle that equipment. Now, in this case, we should have, they use some radar, but it has more, say, disclaimers. Now, debris will have all kind of things. It will have stones. It will have say steel. It will have girders. So now it could not discern those things. So that's how correct, the auger blade got stuck. In case if a better radar. So first is that we'll have to develop a standard operating procedure, and second thing is equipment itself will have to be improved, and that is where the industry will have to come forward to come out with the equipment which can be used for this kind of a thing. Now, the last is we have to salute to the strength of these workers, be it rat miners, be it 41 workers who were stuck there. Now, my sense is that Indian strength, a worker's strength is tremendous, and they can do everything which no others can't even imagine. And this correct, is where this is based on their capacity to work on frugality, joint family systems in villages, their faith, because they were actually this 41, they had that Baba Kalnath or something. They were very sure कि वो हमको बचा लेंगे. So therefore, when they started coming out, Jai Shri Ram and Hanuman Ji ki Jai. Third thing is commitment to fellow workers, irrespective of caste, creed, religion. You know, all these, I'm not going into the politics of it, but the fact is, Indian civil stream, Indian populace is fairly secular. Rat miners are, majority of them are Muslims, but they said, ये हमारा कमिटमेंट है हमारे भाइयों के लिए, हम इसके लिए पैसा नहीं लेंगे, एंड दे begged to be employed. By the way, correct, they begged to be employed कि हमको ये काम दे दो, हम कर देंगे इसको, and they did it. correct, Similarly, even that अंदर जो लड़के थे उनमें भी there are all kind of people are there, and they remain meshed together. And this is what the strength of Indian society is, that this needs to be leveraged. I finished. Anything, any questions or something which we can always take on? no, no, sir. I think we have covered about 34 minutes of the issue. I only wanted to say one more point. I wanted to reiterate was that कि जो हमारे जो challenges हैं हिमालयाज के वो हमारे अपने हैं. हमारे इस तरह के challenges बाहर और कहीं नहीं मिलेंगे आपको. तो अगर बाहर की मशीनें, बाहर का इक्विपमेंट आ रहा है, तो वो लाइबल टू फेल होगा क्योंकि मैंने उस इंजीनियर का भी वो सुना था इंटरव्यू. उसमें उसने बोला था
हमारी जो मीडिया थी बोल रही थी बस अब 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। जब इनकी इंटरव्यू ली तो बोल रहे थे कि भाई मुझे नहीं पता, दिस में टेक 2 आवर्स, दिस में टेक 1 वीक। और वही हुआ और 1 हफ्ता लग गया, बिकॉज ही वॉज In नॉट fact, वेरी। Arnold Dix, that gentleman said that हाँ, it may go up to Christmas. यस। तो मतलब अब आप सोच लीजिए, इसी से आपको मेंटालिटी पता चलती है कि आत्मनिर्भरता हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर जब तक हम अपने सिचुएशन के लिए, अपने कंडीशंस के लिए चीजें नहीं बनाएंगे, तब तक हम फॉरेन पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे। अल्टीमेटली फिर मॉडिफिकेशंस करना पड़ा। और मैंने I think शुरू the political class, policy makers need to. This should be the national priority to kind of give a boost to indigenous में production on all kind of equipment, not only military equipment, which in any case is very essential, but करेक्ट, even this kind of equipment, which is a capacity building. And also simultaneously, not only industry will have to do it, uh, also the engineering part, also the skill development, also the supervisory staff's capability. So all these things, that capacity building of all kinds needs to be done. Now, one thing which we must not go by, that Western standards. This rat miner, some bloody goddamn joker has said, it is our age-old technique, एब्सोल्युटली। and finally it worked. Now what I'm saying is that there are dangers in this, so we must try to help them to find कि भाई इसको हम बचा कैसे सकते हैं, कि अगर कोई इसको चोट लगे, फेट लगे, उसको compensation कैसे दिया जाए. They are very very, lowly paid people. उसका आई अगर ऐसा कोई काम करने वाला वेस्ट में होगा, so he will be paid bloody millions of dollars. वो सर अंदर इसका जाके जो काम कर रहा सर है, और यहाँ सर उनको साला दिन का दिया जा रहा होगा 200-300 रुपए. अब सर इनका एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, इसका नहीं, इसी तरह की एक बात का। हमारे जो डॉग्स होते हैं, जो स्निफ़र्स होते हैं, हम हर तरह के डॉग्स रखते हैं अपने पूरे जो केनल में। उसका रीज़न क्या है कि बड़े डॉग्स जो हैं, उनकी एक लिमिटेशंस होती है छोटी जगहों में जाने की। जैसे कि आप जानते हैं मैं एनएसजी में भी था, तो हाँ अगर हम हाँ. अगर हम एयरक्राफ्ट के अंदर सर्च कर रहे हैं, तो बड़ा डॉग कुछ ही दूर तक जा सकता है। तो हम लोगों ने छोटे वाले जो कॉकर स्पैनियल होते हैं ना, उनको किया था केबिन की सर्च के लिए। ऊपर जो केबिन में आप लोग अपनी अटैचियाँ वगैरह रख देते हैं हाँ. छोटी-छोटी, उनको कैसे सर्च करना? अब उसके लिए तो इसी की ज़रूरत पड़ती, तो वो हमने छोटे डॉग्स ट्रेन किए। तो हर चीज़ के लिए हमारे को अपना खुद का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई तो। आई थिंक दुष्यंत, सर आपको मैं इसको रिट्रेट करूंगा कि हमारी सिविलाइजेशन है साढ़े, जिसको कहा जाए 5,000 साल से ज्यादा है. करेक्ट, एंड जो इसका मतलब, ये प्रॉब्लम कोई आज की तो नहीं है, तो पहले भी आई होंगी. बिल्कुल, सम सिमिलर प्रॉब्लम्स पहले भी आई होंगी. जो हम एब्सोल्यूट लोग अभी उसको क्या वर्ड, मतलब नॉन टेक्निकल वर्ड दे देते हैं कि प्रलय हो गई और ये हो गया वो हो गया. तो सब काइंड ऑफ करेक्ट, डिजास्टर तो पहले भी आते थे. And we बिल्कुल, came out of this, and our civilization survived. So that करेक्ट, means we have to look for indigenous solutions for each and everything of ours. Then करेक्ट सर। only we will be, and we are a huge country and we can do it. Our और people can do it. लास्ट पॉइंट सर, जो आपने पॉइंट बताया था बारकोड थ्रस्ट का, ये एक वीडियो एनिमेशन से आपको दिखाई देगा कि जैसे ये इंडियन प्लेट जाके जो यूरेशियन प्लेट से मिलती है, अगर आप ध्यान देंगे तो व्हाइट कलर का जो एनिमेशन जा रहा है, हमारा जो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है जहां पर ये दोनों मिलते हैं, वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ऑब्वियसली जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी बताया गया था कि ये इलाका काफी अनस्टेबल है। और कुछ दिन पहले अर्थक्वेक हुआ था, नेपाल में भी हुआ था, हमारा पूरा इलाका हिला था। उसका असर तो पड़ना ही पड़ना है, तो हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट इसमें दुष्यंत, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये है ना, ये हुँ, एमसीटी कहलाता है. ये जो थ्रस्ट है, 3 थ्रस्ट जो कि 3 हिमालयस को डिवाइड करते हैं, हाँ जी, आउटर हिमालय, इनर हिमालय और शिवालिक. तो ये करेक्ट, एमसीटी जो है आउटर हिमालय और इनर हिमालय के बीच का है. एंड दिस हाँ, इज वेरी क्लोज टू इट, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. सो करेक्ट। ये हम लोगों को ध्यान देना चाहिए. दैट्स व्हाई आई सेड कि अलाइनमेंट डीपीआर में जब हुआ, तो ग्राउंड पे इनको जाके उसको चेक जरूर करना चाहिए था. और सर थैंक यू वेरी मच। अभी मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, कि प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हम कोशिश करते हैं अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो क्यूआर कोड भी है हमारा लगा हुआ है। आप लोगों की
आप लोगों की मदद से हम इस चैनल को और आगे ले जाना चाहते हैं। एक बहुत ही एक एक रिफाइंड चैनल हम बनाना चाहते हैं इसको, पॉलिटिक्स से दूर, एक जो हमारे को नेशन बिल्डिंग के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो हमारे को चाहिए हमारे देश के लिए, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर अभी लेते हैं सर। कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो मैं सबसे पहले पहले तो आपको मैं बता दूं, कोई आपके सपोर्टर हैं, जयहिंद चतुर्वेदी सर, सुरेंद्र बैरागी, काली रामन सर। आई डोंट नो वेदर यू नो हिम, बट नहीं। चलिए कोई नहीं सर, बट ही हैज थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। okay. So there is one question. There are a lot of people who are commenting on you and me. So let me share some of them. Okay. Uh, Ask lighter sense. Pak army is good in agriculture. Sino army good as cultural pandits. Hamas is good in tunnel fabrication. Where is our army? So basically, he's asking, our army is overall good, sir. I think tunnels तो हम भी बहुत अच्छा बना लेते हैं. आपने रेफर भी किया था, बीआरओ हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है. सीधा सा मतलब अगर मैं जवाब दूं कि हमारी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है. आप कुछ बोलना बिल्कुल। चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि वी आर नॉट यूनिडायमेंशनल आर्मी. करेक्ट. Anything you can do, I can do better. That is our principle. करेक्ट. And देश के लिए कुछ भी करने को कभी भी किसी तरह तैयार हैं. Like 201, they are the people who are working behind the scenes. BRO was working behind the scenes. It's not that they are trying to hog the limelight or something. And they worked and they provided the kind of support which is necessary. So therefore, it is essential that if you see Atal Tunnel में दुष्यंत, let me just share it with our viewers कि उसमें पूरा एक तरह से नाला जो है पानी अंदर आ रहा था. Okay. And it took some time for BRO to try to totally divert that nala. And today that tunnel is a technical marvel. So therefore, in this case also, probably at some point in time in future, we will be needing this kind of expertise because वहाँ पे water ingress possible है. आसपास काफी पानी है and water bodies हैं, तो वो पानी का ingress और उसकी जो रॉक कंटेंट है, that's a kind of crushed rock, and उसमें पानी आ गया तो क्ले बन जाएगा, नीचे फिर गिरने का चांस है. तो ये जो है, जो इंडियन आर्मी है, वो जिसको कहते हैं ना, चाहे कितनी ऊंची चोटी हो, चाहे कितने गहरी खारी हो, they can do anything. आप इन्फेंट्री वाले हो, आप जानते हो कि कोई काम ऐसा नहीं है जो इंडियन आर्मी नहीं कर सकती है. वही बिल्कुल सही सर. जहां सब फेल हो जाते हैं वहां सिर्फ आपके पास एक विकल्प Last होता है. instrument of the exercise of will of the nation is army. इंडियन डिफेंस फोर्सेस, जिसमें इंडियन आर्मी, उसके पास हर तरह की तकनीक है कहीं भी पहुंचने की. आपको याद मैंने होगा, कहीं अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बढ़िया कविता पढ़ी थी. मैं जस्ट आई वांट टू शेयर दैट. वो इट सेज हिंद का जवान 1 लाख के समान है. आंधियों से बिजलियों बवंडरों से ये बना, आग के अंगार और समंदरों से ये बना. ये चला कि जल जलों का एक काफिला चला, शक्ति शौर्य जय विजय का एक सिलसिला चला. So this is what Indian Army is. Absolutely. It's a epitome of courage, conviction and determination. अगर ये तीन चीजों को अगर आप जोड़ दें तो मेरे ख्याल से इंडियन आर्मी को आप बिल्कुल पर्सोनिफाई कर रहे हैं. अगला सवाल हम लेते हैं, कुमार गोपालन का ही है. ओके, एक तरह से इन्होंने शेयर किया, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बाय आवर नेशन, थैंक्स टू ऑल. नाउ वी बिलीव वी कैन अचीव एनीथिंग. द विल ऑफ द वर्कर्स इज वेरी ग्रेट. द नेशन टोटली with the rescue team and salutes the government. Salutes to the government. I mean, एक इसमें एक पॉइंट मैं देना चाहता हूँ जो गोपालन ने पूछा, बहुत बढ़िया इसने कमेंट है. इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ. You know, there was a time when the value of human life in India was less, and you compare it with other countries. Correct. 18 people died in Somalia of US, and US withdrew their troops from there. Correct. Whereas
नाउ वी हैव डिटरमिन्ड कि हमारा एक बंदा भी, यू नो, बिल्कुल दिस ऑपरेशन मस्ट हैव कॉस्ट, अगर हम डॉलर टर्म में बोले तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ ऑफ रुपीस खर्चा हुए होंगे, करेक्ट। लेकिन वो 41 लोगों की जान बचा के लाया गया है, विच इज अ ग्रेट नेशनल कमिटमेंट टू द पीपल, एक एंड इट एक इज नेशंस कमिटमेंट, एंड एवरी एक एजेंसी वर्क टुवर्ड्स इट. एक एग्जांपल मैं दूंगा सर, अगर लोगों को याद हो, शायद भूल गए हो। सियाचिन में जब एक बार एवलांच आया था, तो हमारा एक हवलदार जो था, हाँ, बर्फ के अंदर करीबन 18 या 19 दिन पड़ा रहा। उसको खोदने में हमको इतना टाइम लगा, एवलांच हो रहा था, ब्लिज़र्ड हो रहा था, लेकिन हमारी जो फौज थी उसको, उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिरी समय तक खोजते रहे जब तक कि उसका शरीर नहीं मिला। बाद में वो जिंदा था। इतने दिनों के बाद वहां तो उसके पास न पानी न कुछ न कुछ, बर्फ जम गई थी, लेकिन वो जिंदा रहा। वो अलग बात है कि बाद में वो हनुमंतप्पा और समथिंग ऐसा कुछ नाम था हनुमान उसका. टप्पा उसका नाम था। तो आप सोच लीजिए, मैंने जो बोला था ना, डिटर्मिनेशन, जहाँ जहाँ सब फेल है वहाँ इंडियन आर्मी है। अब आगे आते हैं, एक और कमेंट है। आज कमेंट्स का दिन चल रहा है। जनरल सर, हर्ड दिस कहावत आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हाथी जिंदा लाख का, मरा सवा लाख का, हालांकि उसके दांत की वजह से है। प्लीज रिमाइंड अगेन व्हाई इट वाज सेड इन द मेडिवल टाइम्स, मरा हाथी सवा लाख का, व्हाई डेड हाथी had more value because of its various parts which could It's, be sold yes, yes. could be And sold off. today, yeah, today for practicality of poor people who are involved in this. इसीलिए वो बैन भी किया गया। आइवरी जो थी बहुत कॉस्टली हुआ करती थी, तो मरने के जी, बाद की जो आइवरी होती थी वो सेल होती थी, तो वो एक बहुत हाइट भी इसका काफी वो होता था, बहुत बहुत. कॉस्टली होता था। तो इसलिए इन वजहों से मरा हाथी सवा लाख का बोला जाता था। अब उसको उन्होंने कंपेयर इसलिए किया क्योंकि वैल्यू ज्यादा हो जाती परिवार के लिए, उसके लिए तो नहीं उसका। लेकिन ये भी एक अच्छी चीज जनरल चतुर्वेदी ने बताई कि अब अब मैं आपको इक्विपमेंट की प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। रशिया के जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, तो इसलिए वो फायर पावर और एजिलिटी में ज्यादा जोर देते हैं और आर्मर प्रोटेक्शन में कम जोर देते हैं। वहीं वेस्ट को देखेंगे तो वो अपने टैंकों में आर्मर प्रोटेक्शन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी लाइफ लॉस हो। इंडिया इंडिया के पास भी, हम भारत के पास भी बहुत सारी जनसंख्या है, लेकिन भारत तीनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। प्रोटेक्शन भी देना चाहता है, फायर पावर भी देना चाहता है, और एजिलिटी भी देना चाहता है। एजिलिटी भी देना चाहिए. वो अलग बात है कि वो बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश पूरी करता है। यही डिफरेंस है भारत में और बाकी देशों में। बाकी आप लोगों को आप लोग खुद समझदार हैं। एक और है सवाल। यस, भारत डिड फील लाइक सुपर पावर 17 डेज ऑफ नेशनल एफर्ट इन उत्तरकाशी रेस्क्यू टनल वर्क, नॉट इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट बट इन टर्म्स ऑफ नेशनल विल, इट सीम्ड सुपर पावर भारत। ओके, ओके, आई थिंक सारे आज प्रेजेस में आ रहे हैं, तो मैं एक एक करके फ्लैश करते जाता हूँ, क्योंकि एक खुशी का दिन है, एक दिवाली मनाने का दिन है, क्योंकि ये परिवार ने दिवाली नहीं मनाई थी क्योंकि उनके सारे परिजन फंसे हुए थे। अब उन्होंने बोला है कि अब हम नए सिरे से दिवाली मनाएंगे। प्लीज नोट, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड had made a camp office near the tunnel and continuously stayed till completion, and this is great and we need to appreciate this। हालांकि इसमें एक दूसरा पॉइंट भी आता है कि कभी-कभी अगर बहुत सीनियर लोग नज़दीक पहुँच जाएँ, वर्कर जहाँ साइट के पास, तो वहाँ पर फिर थोड़ा-सा इंटरफेरेंस का एक माहौल सा भी आ जाता है, तो इसलिए हमको थोड़ा-सा बैलेंस इसमें बना के रखना चाहिए। अ, एक 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 बहुत छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूँ, गुड ऑब्जर्वेशन मैं बताना चाहता हूँ. हुँ, इफ यू नोटिस, जहां कहीं भी इंडियन मैसेज की, इंडियन पीपल की प्रॉब्लम आती है, हुँ, वहां पे किसको भेजा जाता है? जनरल वीके सिंह को. बिल्कुल। विच शोज दैट द ट्रस्ट ऑफ इवन द गवर्नमेंट, कि भाई अगर इस बार भी आदमी क्राइसिस है तो भैया एक फौजी ही इसको हैंडल कर सकता है. बिल्कुल। सो भई जनरल वीके सिंह वाज सेंट एंड अगर ही सेड देयर. अगर अगर देखिए, मैं जब सीओ था, एक हमारा पराक्रम चल रहा था पाकिस्तान के साथ, हम पार्लियामेंट अटैक के बाद, जब हमारी वहाँ ड्यूअल्स होती थी, आर्टिलरी ड्यूअल्स, बाकी फायर ड्यूअल्स, रेड्स होती थी। आपको काम करना है और आपके बगल वाला का डेथ हो गया है, आपके बगल में गिरा है वो,
तो जो इस तरह की स्ट्रेस देखता है, अपने अपने साथी को इस दुनिया से जाते हुए देखता है, उसको पता है कि इसकी भी देखभाल करनी है, इसको भी मुझे पीछे ले जाना है और आगे वो काम कर रहा है, उससे बड़ा स्ट्रेस क्या हो सकता है? तो हाँ ऐसे जनरल्स जो या ऐसे जवान जो हैं, जनरल, जवान, जेसीओ सभी लोग, इन्होंने वो देखा होता है जो शायद किसी ने नहीं देखा हो। तो उनके लिए स्ट्रेस मैनेज करना एक बहुत ही आई वुड से दे आर द बेस्ट कैपेबल जो अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, बट इनको थोड़ा ट्रेनिंग मिली हुई है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा वो है। Okay, next question, sir. Ask General sir, why are ancient Bharat from Himalayas to ocean, from Sindhu to Brahmaputra, does not have, or we do not by choice native dog breeds? There must be many worthy of domestication. May I take on this thing, sir? हाँ आप ले लो। Okay, अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं तो since I was dealing with dogs, so I am aware of it. तो नहीं नहीं, व्हाई नॉट, आप दे दो, अगर कोई होगा तो आई विल चिप इन लेटर, आप बताओ। देखिए, लुक फॉरवर्ड। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन था कि हमारे पास डॉग नहीं है, ब्रीड नहीं है। कर्नाटक में वहाँ के जो किंग थे, उन्होंने एक मोंगरेल इंडियन ब्रीड तैयार की थी, जो कि डोबरमैन और एक तरह से डोबरमैन और जर्मन शेफर्ड के बीच का टाइप का उसका वो था, एक स्ट्रक्चर था लंबा, और काफ़ी फुर्तीला और काफ़ी खूंखार होता था। वो अभी भी है, और इसको अब धीरे-धीरे हमारे फोर्सेस ने अपने सर्विस में लाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में आ गया, छत्तीसगढ़ कमांडो फोर्स के पास आ गया, झारखंड के पास आ गया है, और एनएसजी भी प्लान कर रही थी कि इसको लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ब्रीड नहीं है, हम लोग देखना नहीं, हम हमारे को क्या आदत है, बाहर वालों की नकल मार लो सीधे। आपको आपको हैरानी होगी, जब मैं जीओसी था तो मैंने कोर कमांडर और डिव कमांडर दोनों समय पे 40 अपने अपने देसी डॉग्स को ट्रेन करवाया था, और वो इतना अच्छा हो गए थे कि हर सिक्योरिटी पोस्ट पर वो लगे हुए थे, और उनको सब कुछ आता था जो एक लैब्राडोर या जर्मन शेफर्ड कर सकता था। उनको ट्रेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको बचपन से ही निकाल दें, हमने उनको जब वो 1-1 महीने, डेढ़-डेढ़ महीने के थे, तभी से उनको सेग्रीगेट कर दिया था, और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग की थी। आप देखिए, जम्मू में जो रहते हैं, वो जाके चेक कर सकते थे। उस समय जब मैं डिव कमांडर था, ये मैंने पूरा 40 डॉग्स की फ़ौज बनाई थी, अपने डॉग्स की। तो हमें अपने आप को कम नहीं आँकना चाहिए, अगर हमारे में जज़्बा है। ठीक है, हमारी हमारी ब्रीड बड़ी नहीं है, जो इंडियन आदमी भी देखेंगे तो बाकी लोगों से छोटा है, उतना लंबा-चौड़ा नहीं है, एक अमेरिकन सामने आ जाए या कोई अफ्रीकन आ जाए तो वो हमारे, हार्डी है, बट ही इज हार्डी। बट इंडियन डॉग्स आर हार्डी। हमारे अंदर एक अंदरूनी ताकत है, एक अंदरूनी शक्ति है, एक डिटर्मिनेशन है कि हार नहीं मानूँगा, रार नहीं ठानूँगा, वक़्त के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत गीत नया नहीं गाता गाता। हूँ। तो ये जो नो इन दिस केस जी की वो जो एक कविता है, हाँ, हाँ जी ये सर। एक और मैं बताता हूँ, इसमें क्या है कि जो सबसे बड़ी चीज जो है कि एक, फर्स्टली लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू, इफ मेनका गांधी इज लिसनिंग टू आवर प्रोग्राम, she will just applaud you because she is a great votary of Indian dogs, and she करेक्ट, says that we must pet Indian dogs rather than these foreign dogs, because foreign dogs have got their limitations. We have been used to this kind of thing, but if we start, and I've seen some of the fellows, they are like in Andaman, I'll tell you, there the dogs don't survive. But I know one, I will not name. There was a officer who had a mongrel, and he is the only one who survived there. So करेक्ट, therefore, they are much more hardy and they are sharp. And rest of the things can be done by training. Rest all are trainable qualities. करेक्ट। ये देखिए, राज्यपालम तमिलनाडु से, अभिषेक काले ने बोला, राज्यपालम इज़ तमिलनाडु नेटिव ब्रीड, रिसेंटली जॉइन्ड आर्मी डॉग स्क्वाड। तो ये हम कर रहे हैं, अभी हमारा इंडिजिनाइज़ेशन, आत्मनिर्भर भारत खाली हथियारों में नहीं हो रहा है। आत्मनिर्भर निर्भर भारत जो है, डॉग्स में भी हो रहा है। तो जेबी, आई थिंक यू शुड बी हैप्पी दैट हमारा जो देश है, एक तरफ बढ़ गया, एक नई दिशा की तरफ बढ़ गया, एक नए मोड़ की तरफ बढ़ गया है, और इसको हमें स्वागत करना चाहिए। एक अगला सवाल जो है वो है कर्नल आरपी सिंह का। मिलिट्री इन द स्मॉलेस्ट ऑपरेशन आल्सो प्लान्स ऑफ अल्टरनेटिव टू अचीव दिस सक्सेस,
Why alternate option rat hole concept was used later? Planning need accountability to safeguard against such mishap. I think this can be straight away answered by you, sir. It is a combined integrated approach. इनकी जरूरत जब पड़ी तब उनको यूज किया गया. No, actually, you just can't go to say rat hole method from the 50, beginning, very beginning. yeah, Uh, 50, 70 you meters. use equipment based, technology based. If that did not work, then finally, because as Nitin Gadkari had said, that 6 options they had worked out, and which I mentioned. I reiterate that first is that you dig a hole through the debris from Silkyara side. You dig a hole from the debris from stone, say rock from Barkot side. You go for those drift tunnels. You go for top Yeah, 2 tunnels. So those 6 options were worked out, and finally, that the final stretch, they said that we will be using manual. So all correct. those options they were planned, and and one in sequential manner they applied, and whatever when it others failed, then this worked. That is why it is. Because if they had started doing 60 kilometers by doing this kind of a thing, say rat hole method, would have been counterproductive, ये not the right. बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है बहुत इसमें. टाइम लगता है. तो Yes. ये वहां पर यूज किया जब जब बिल्कुल नजदीक आ गए थे और बाकी कोई ऑप्शन 12 मीटर, मशीन फंस 24 गई. घंटे 12 मीटर में, वेर एज इफ यू नोटिस, अगर 24 घंटे में वो 12 मीटर से ज्यादा कर रहा था, 24 मीटर कर रहा था. अगर करेक्ट. ठीक तो ठाक होता तो 2 दिन में वो डिग कर देता, अगर बाहर. नहीं आते. हम्म. एक आपके लिए एक स्पेशल कमेंट दिया है जेबी जेपी ने. आई थॉट आई मस्ट शेयर इट विथ यू. आस्क, प्लीज डोंट माइंड द क्वेश्चन. आई होप यू डू मेंटेन सच ग्रेट मुस्टैच जन चतुर्वेदी. When and why did you start keeping these awesome mustache again? I hope you don't mind. So, so you got your No, favorite I question. mustache, but it started growing when I was commanding in Valley, just to scare militants away. Okay. Okay. So, today the audience seems to be in a good mood, although not many. But जल दुष्यंत सर के नाम का अनुवाद है हिंदी पंजाबी में बनेगा दुष्टों का अंत करने वाला सिंह. You became general as per your name as Serv Bharat. We salute you. Thank you very much, JB. I think we are getting a lot of comments today. So let's enjoy these lighter moments. हर Yes. उसमें एक अच्छी चीज आनी चाहिए, लाइट मोमेंट होना चाहिए हर डिस्कशन में. एक और डॉग जो है हमारा लिया जा रहा है, उसके बारे में भी कमेंट आया है और वो है बुली कुत्ता, जिसका नाम है बुली कुत्ता बोलते हैं. सम्राट अशोक पाटलिपुत्रा बिहार ने बताया है. देखिए अब इस प्रोग्राम ने क्या-क्या जनरेट कर दिया. हम एक क्वेश्चन ने हमको ये बता दिया है कि भारत में क्या-क्या रिसोर्सेज हैं. कहाँ तमिलनाडु, कर्नाटका, फिर ये बुली कुत्ता जो बिहार से बोल रहे हैं. और मैंने बोला लोकल डॉग्स भी आप इन काम में लगा सकते हैं. थोड़ा स्लो होते हैं लेकिन एक बार ट्रेन हो जाते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं. वो भी वही काम करेंगे जो आपके नॉर्मल डॉग करते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसलिए हम लोगों को इस सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. एक लास्ट कमेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं. जन वीके सीन इन डेजर्ट टू रेस्क्यू इंडियंस, नाउ सीन oblique led from the front in the mountain rescue mission. Don't we need good accountable leadership? Of course, yes, we have already Yes. discussed about this. सो सर आई थिंक आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं. और थैंक यू ऑडियंस, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसमें हमारा साथ दिया. कुछ लाइटर मोमेंट्स, कुछ लाइट क्वेश्चंस पूछे और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो हमने जानी है इस प्रोग्राम में, एंड दैट इज़ दैट वी शुड नॉट रश इनटू प्रोजेक्ट्स दैट आर सेंसिटिव, दैट कैन कॉज लाइव्स टू बी लॉस्ट. क्योंकि हमारे लिए हर जीवन कीमती है. क्योंकि एक लाइफ गई तो उसके साथ परिवार के 4-5 लोग और भी अफेक्ट होते हैं. और जो जॉइंट फैमिली से थे उनके लिए तो और भी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है. दूसरी चीज़ जो हमने देखी कि भारत की जो एकता है ऐसे समय पे निखर के सामने आती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो भी किसी रीजन का हो. इसमें ही देख लीजिए आप, 15 लोग झारखंड के थे, बाकी सब जगह से 1-1, 2-2 लोग थे. इनफैक्ट उत्तराखंड से खाली 2 लोग थे. तो कहने का मतलब है हमारे लिए उसका जात, And धर्म.
और बेस्ट पार्ट दैट जो लेडीज वहां बाहर पूजा कर रही थी वो सब उत्तराखंडी थी, उन बिल्कुल, लड़कों के लिए पूजा कर रही थी जो उनके अपने क्षेत्र के भी नहीं थे। बिल्कुल। दैट इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट। तो ये जो एक रैट होल माइनिंग वाले आए वो वो ज्यादातर मुस्लिम्स थे, बट दे करेक्ट। स्टिल वर्कड एंड दे सेड कि हम इसके लिए पैसा, बाय द वे दे आर नॉट टेकिंग एनी मनी फॉर दिस काइंड ऑफ अ थिंग। सो दिस इसको शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया एंड दिस इज इस रियल इंडिया। मतलब वो जो पॉलिटिशियन बोलते हैं उनको भूल जाओ, असली इंडिया ये है एंड वी मैं मस्ट स्ट्रेंथन। मैं तो सिर्फ एक बात में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि हम हिंदू हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं, इसलिए हमारा हिंदुस्तान ऐसा है। और फिर वही शेर पुराना याद आ गया, मिट गए जहाँ से मिस्र और रोमा, कुछ हस्ती है हमारी ऐसी कि रोम मिटती नहीं। मिश्रा सब मिट गए जहां से, लेकिन अब ये बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा। हमारा और इसको बहुत खूबी से बोलते हैं आरिफ आरिफ मोहम्मद खान, जो कि गवर्नर हैं केरला के। अब आप देखिए कितनी विविधता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये पूरे माहौल को खराब करते हैं, उसके बारे में हम इस समय डिस्कशन नहीं करेंगे, उसका एक अलग प्रोग्राम होगा। तो हमको उसको उसी नज़रिए से देखना चाहिए। थैंक यू सर, जय हिंद टू यू सर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग कम अप ऑन दिस शो। वी हैव कंप्लीटेड 1 आवर। आई हैड थॉट कि हम 1 घंटा से कम करेंगे, लेकिन बात करते-करते बात बढ़ गई। तो थैंक्स ऑडियंस, एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।